मैं तो लाइव वो भी करूंगा बोल रहा हूँ। सॉरी चिल्ड्रन, सम आई थॉट टेक्निकल एरर, बट बाद में पता चला इट्स यूट्यूब ग्लिचेस, बिकॉज मेरे यहाँ पे दिखा रहा था दैट लाइव स्ट्रीमिंग इज नॉट अवेलेबल नाउ, समथिंग लाइक दैट। आ रहे हैं वहाँ पे, मैं फिर से इश्यूज दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि नहीं? नहीं, it's not showing live. It is showing now, I think. It is live. Well, you check from different phone. No, you're checking from my phone. How will that be possible? It is possible. Because the same ID, na? No problem. That's what I'm saying. Okay, now. That's what I'm saying. Check it from different phone. And what about this mic? It is okay. No, like you chose that communication airport or something like that, na? It's okay. Fine. Fine. उसको म्यूट करो वहाँ पे। अरे yes, children, because of this YouTube glitches, it wasn't fault from our end because I was trying to go live, but I was getting an error that live streaming अभी possible नहीं है, something like that. So बार बार कट जा रहा था. Uh, कौन कौन है? Can you tell me? कौन सा? What were we discussing? We were talking, I guess, regarding some Europe, and then the next was challenges or globalization, something like that, right? Somebody was asking me about G20, and I could see in the previous comment that it was being stated that it is out of the book. Are you there, children? Let me wait for some time. Let me wait for some time. There was another student who was asking me about the challenges of what? Democracy or political party, something like this, right? Yes. So one student I got. Yeah, I'll tell you. 2 minutes. Be online so that ये technical problem दे रहा है YouTube में. I don't know क्या हो रहा है. दो बार. This is the third time I'm going live. Yes sir, it was good. No issues. कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ना. Okay, so जो बच्चा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, because उसके लिए मैं let me start. The main characteristic of civil disobedience movement. First of all, देखो, civil disobedience. How did it start? It started in stages. Huh? Stage one, stage two, or you can say steps. Step one, step two. It did not start all of a sudden. If you remember, the very first step of civil disobedience was surrendering all the government titles. जितने भी government honors, award, recognition. Government means British government. I'm talking about the British government because that time we were under the British rule. So that was the first step that we will surrender. In a way, we will surrender because it will tell the British government indirectly कि हम उनका सरकार नहीं मान रहे. And if in case they come with this physical violence and all, पीडीएफ सेंड कब करोगे सर? पीडीएफ सेंड नहीं करेंगे, लाइव में ही दिखाएंगे. लाइन पे रहो, मिलेगा. इसीलिए तो पीडीएफ मिलने के साथ साथ गायब हो जाओगे ना. एनीवेज, अच्छा, मिलेगा. आई शो इट टू यू डेफिनेटली ऑल द चैप्टर्स. कमिंग, मैं क्या बोल रहा था फिर से भुला दिया बीच में. अच्छा, civil disobedience. So first step was that we will surrender all the government titles. We will not do government jobs, British government jobs. We will stop going here and there. And then after that, if in case the British government comes with violence, torture, punishment and all, फिर हम जाके civil disobedience करेंगे. मतलब civil disobedience means open खुला हम लोग बोलेंगे कि नहीं, हम पहले तो हम चुपचाप शांति से करेंगे, नहीं मानेगा, फिर हम जाएंगे. Civil disobedience happened twice. दो बार हुआ था. First civil disobedience and second civil disobedience. First was in 1930, if I'm not wrong. Wait, let me be sure, because
बिकॉज से दो बार हुआ था, एक बार 1930 या 31 को, उसके बाद फिर से एक बार 32 समथिंग लाइक दैट। आई गिव यू द फाइनल डेट, प्रॉपर डेट। देयर इज दिस इन पेज नंबर, कहाँ गया, लाइन पे रहो, मैं बता रहा हूँ। Second was in 1932. Second civil disobedience started in 1932, and the first civil disobedience was on this 6th April 1930. नोट कर लो, 6th April 1930 पहला वाला, सेकेंड वाला 1932. It restarted again. अच्छा, पहले कैसे स्टार्ट हुआ था? What was the first beginning, or you can open challenge, or you can say open declaration of civil disobedience? Salt March, breaking of salt law. Gandhi went from his ashram where he used to stay, Sabarmati ashram. कहाँ गया? दांडी, DANDI, दांडी। ये क्या है? एक जगह का नाम है। इसे कोस्टल एरिया, समुद्र के सामने है इन गुजरात। तो वहां पे जाके ऑफिशियली, एकदम सेरिमोनियली, नियम से, रीति रिवाज से, पूजा पाठ करके, एज रिटन इन योर बुक, सेरिमोनियली पूजा पाठ करके उसने सॉल्ट खुद मैन्युफैक्चर किया। बिकॉज अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, there was a law called salt law, which means no Indians can manufacture salt by themselves, because salt was something, in a way, if you say, it was free of cost. पानी से सॉल्ट मिलता है ना समुद्र से। एक बाल्टी समुद्र का पानी लेके आओ, बॉयल दैट वाटर, इवेपोरेट कर दो। साइंस में पढ़ा था, एट द एंड यूल फाइंड इन दी वेसल नीचे कुछ सॉल्ट जमा पड़ा हुआ है। पर ब्रिटिशर क्या करता था कि सॉल्ट लोग बना दिया कि कोई सॉल्ट नहीं बना पाएगा, वी विल प्रोड्यूस सॉल्ट। हम तुम्हारा पानी लेंगे, इंडियन पानी, इंडियन समुद्र का, फिर इंडिया को सॉल्ट बेचेंगे, फिर उससे पैसा कमाएंगे, टैक्स भी लेंगे। राइट? इतने अच्छे थे ब्रिटिशर, दे वर सो गुड, इजंट इट? So, anyways, Gandhi violated that salt law, and it was the official date is 6th April 1930, and that was the beginning of civil disobedience movement. And after that, same as non-cooperation, से मारा उधर से पहले इंडियंस, when Gandhi violated, Britishers came, कि कैसे violate किया, they came with full torture, police अपना हथियार, फिर again Indian supporters went, there was fight everywhere in between. In fact, गांधी का एक बहुत अच्छा supporter था अब्दुल गफर खान। अब्दुल गफर खान, he was also a well-known person. Abdul Ghaffar Khan was a disciple, was a great follower of Gandhi, but Abdul Ghaffar Khan का भी खुद का कुछ followers थे. So Abdul Ghaffar Khan was arrested, and all many people, near about 1 lakh, be it children, be it women, be it old age men, everybody was stressed and brutally punished and killed. Seeing this, Gandhi decided to call off the movement. So that time, the British Governor General in India was Irwin, right? इरविन के पास गांधी गया, गांधी बोला देखो ये सब बंद करो। इरविन से ठीक है हम बंद करेंगे, बट इन वन कंडीशन, यू विल हैव टू एक्सेप्ट सम सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन हमारा। तो गांधी बोला ठीक है, आई विल एक्सेप्ट, प्रोवाइडेड यू आल्सो एक्सेप्ट माय टर्म्स एंड कंडीशंस। सो व्हाट वाज द टर्म्स एंड कंडीशंस? गांधी एंड इरविन, they had an agreement in between them, which was called Gandhi-Irwin Pact. And this Gandhi-Irwin Pact was signed in 5th March 1931 between Gandhi and Irwin. So what was this Irwin's, what do you call, terms and conditions? देखो, you'll have to participate round table conference with the British officials, not here, in London, इंग्लैंड जाना पड़ेगा तुमको। वहां पे जाके, लंदन जाके, हमारे सीनियर जो बॉस है, ऑफिसर है, उससे बात करना पड़ेगा, उनके साथ मीटिंग करना पड़ेगा। इनफैक्ट दिस वाज समथिंग which was earlier, the book says, I don't know, the book says that the same thing was offered to Congress as well earlier, but Congress rejected. जब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड कांग्रेस को बोला था कि आप लंदन जाओ, जाके बात करो, कांग्रेस ने बॉयकॉट किया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्यों मानेंगे? But the same thing गांधी को जब बोला, गांधी बोला ठीक है, I'm ready to go, provided, now what was Gandhi's terms and conditions? गांधी का टर्म्स एंड कंडीशंस था कि ऑल दोस पीपल whom you have put behind the bars as a political prisoner, release them, उन सबको छोड़ दो। तो इरविन बोला ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, बट यू नो ब्रिटिशर्स इतने सच्चे हैं कि यू कांट ट्रस्ट। तो ब्रिटिश गांधी, बेस्ड ऑन इरविन्स वर्ड, गांधी चला गया लंदन। फिर लंदन से आए, आके देखते हैं ये उल्टा, इरविन ने बोला था हम उनको छोड़ देंगे, क्या छोड़ेंगे? उल्टा जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट पार्टी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल पार्टी, ये पार्टी इलीगल है। एंड इवन अब्दुल गफर खान, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफर खान, everybody was put into the prison. After coming back, when he saw this thing कि इरविन ने जो बोला वो नहीं किया, then again with lots of struggle and all, because एक बार जो चीज, जो you know क्या बोलता है, सपोर्ट, वो जो जोश, जो enthusiasmness, हाँ, एक बार जो लोग खो देते हैं, दोबारा उसको लाने में, लाइक सी, राइट नाउ आई कैन सी यहाँ पे देयर आर 4 पीपल जो जुड़े हुए हैं। इन द फर्स्ट व्हेन आई वेंट लाइव, एंड द सेकंड व्हेन आई वेंट लाइव, बहुत सारे लोग थे, बट टेक्निकल ग्लिचेस हो गया, अपने आप कट गया, मैं क्या करूं? एनीवेज, बाद में देख लेगा जो देखना है। अच्छा,
सो दोबारा गांधी ने जब आया लंदन से आने के बाद जब देखा कि यहाँ पे तो सिचुएशन कुछ उल्टा ही है, मुझे इरविन ने बोला कुछ और, यहाँ पे करके रखा है कुछ और। देन ही स्टार्टेड अगेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ट्वाइस, 2 बार। एंड सेकंड टाइम जब शुरू हुआ, दिस टाइम द वे द पीपल, यस पीपल जॉइंड इन, पीपल ये नहीं बोलूंगा दैट इंडियंस डिड नॉट कम, बट वो जो जोश था ना, दैट एंथुसियाज्म ने जो पहली बार जिस तरीके से आया था कि नहीं चलो हमें देश के लिए कुछ करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ब्रिटिशर को भगाएंगे वगैरह, दैट सेम थिंग वाज नॉट देयर। व्हाई इट वाज नॉट देयर? देयर इज अ रीजन। Every people, every group, be it the farmers, be it the businessman, be it whosoever, जिसने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन किया ना, गांधी ने बुलाया बोल के ज्वाइन किया वो मत सोचना। आई एम नॉट सेइंग बुक में लिखा हुआ है you will say sir is against Gandhi. No, the book says all these groups of people who joined this civil disobedience movement, they had their own personal self-interest, and to fulfill that particular self-interest, they joined the civil disobedience movement. At first, when it started, that too with lots of enthusiasm. But however, when Gandhi called off the movement, जब गांधी ने movement बंद कर दिया था, without their self-interest being getting fulfilled, जो जितने भी लोग ज्वाइन किए थे ये सोच के कि मेरा ये पूरा हो जाएगा, मेरा जो ये था मैं इसके थ्रू वो पूरा कर लूंगा, बट वो पूरा हुआ ही नहीं, गांधी ने बीच में बंद कर दिया वो इरविन के साथ एग्रीमेंट करके। सो सेकंड व्हेन इट स्टार्टेड, सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, that time these people did not have the same feeling, same what do you call support or same energy. Clear? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पीडीएफ कब सेंड करोगे? पीडीएफ करूंगा, सेंड नहीं करूंगा, बीच में मिल जाएगा लाइव सेशन में। पीडीएफ बन रहा है, बन रहा है? हाँ? अच्छा, वो क्या पिन कर देगा ये लोग? आई एम नॉट दैट टैक्स सेवी गाय, मैं इतना टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता हूँ। सो आई हैव माय बॉयज आउट हियर, द आईटी टीम, करेक्ट, फ्रॉम आईआईटी मद्रास, isn't it? Yeah, they are pursuing their courses in IIT Madras, so that's what I say. Anyway, so they are doing all those things. They will be sharing it. बीच में share कर देगा, don't worry. अच्छा, next क्या था? Sir, can you explain Simon Commission? H. Borua. Yeah, H. Borua. I don't know which child is this, but yes, my dear child, definitely listen. Simon Commission क्या था? ये कौन सा था? हाँ, इकोनॉमिक डिप्रेशन। व्हेन इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा था, जब इंडिया वाज बैडली अफेक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमी मतलब पैसा, सबका पॉकेट में पैसा गिर जा रहा है। तो सबके पॉकेट में पैसा ही नहीं है, तो क्या हम सामान खरीदेंगे, क्या बाजार खरीदेंगे? स्पेशली द फार्मर्स, एवरीबॉडी वाज बैडली हिट, बट द फार्मर्स वर एक्सट्रीमली हिट, बिकॉज़ फार्मर्स जो होते हैं ना, जो खेती-बाड़ी जो बनाते हैं ना, वो लोग जो भी सब्जी, आलू, प्याज जो भी बनाते हैं, इट हैज़ गॉट अ सेल्फ लाइफ, एक अपना टाइम होता है। जब फॉर एग्जांपल आई एम अ फार्मर, ठीक है? मुझे आलू पसंद है। सोचो मेरा आलू का खेती है। अब एक आलू प्रोड्यूस करने में मुझे फॉर एग्जांपल अ, वो 10 डेज़ लगता है, ठीक है? 1 किलो आलू बनाने के लिए मुझे 10 डेज़ लगता है, एंड आई सेल दैट आलू एट ₹50 पर केजी, एंड मेरा पॉकेट से जाता है उसमें पकड़ो ₹30, तो ₹20 का प्रॉफिट होता है। बट नाउ मार्केट में आलू का दाम गिर गया। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। बट इसके आलू का दाम गिर गया, डज़ दैट मीन कि मेरा जो 1 केजी आलू 10 दिन में बनता था, अब वो 1 केजी आलू 2 दिन में बन जाएगा? नहीं ना, मेहनत तो वही चाहिए ना, टाइम तो वही चाहिए। दैट सेम लेबर, सेम हार्ड वर्क, सेम पीरियड आई हैव टू वर्क, बट हाउएवर आई एम नॉट गेटिंग द सेम अमाउंट टू गेट, बिकॉज़ पीपल डोंट हैव मनी। हाउ विल दे बाय? नाउ व्हेन आई टेक दैट पोटैटो एंड गो डोर टू डोर, व्हेन आई टेल द पीपल 1 kg is ₹50, people will say, no, bhai, I can pay you 20 if you want to pay, give me a 20 give. Now, I know I'm at loss, but I'll say no. ठीक है, एक घर मैंने नहीं बेचा, दूसरे घर, but I'm seeing that all the houses are offering me ₹20 only. Nobody is offering me more than that. So as a result, even I am at loss, but I'll have to sell those potatoes and come back. Why? Because वो घर पे लेके आऊंगा, कितना दिन रखूंगा? एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 6 महीना, फिर बाद में जाके वो सड़ जाएंगे। जो ₹20 मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। So at least 20 तो मिल रहा है। सो एज अ रिजल्ट लॉस में ही बेच के आना पड़ता है। ओके, कमिंग बैक टू साइमन कमीशन। नाउ इसका क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन है बिकॉज़ आलू कौन बनाता है? फार्मर्स। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दोज़ डेज़, यू कैन से आज भी अराउंड 80, अप्रॉक्सिमेटली 80, 75, 85 आगे पीछे। आज भी अराउंड 70% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी, नॉट टर्शियरी, क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में है। During those days, so 90, 85, 90% people were in farm, were engaged in this farming activity. So definitely they were badly hit. Number one, because loss. Number two, ये ब्रिटिशर हमारे घर पे आएंगे, हमारे यहाँ रहेंगे, हमसे ही टैक्स लेंगे। क्या का टैक्स? हम आपको देख रहे हैं ना भाई, क्या देख रहे हैं? सॉरी, ये देखो ये मेरा बच्चा लोग ना मुझे तकलीफ ना। ओके, सॉरी, कहाँ था मैं? हाँ, सो ब्रिटिशर्स दे वर आस्किंग टैक्स, उसको टैक्स चाहिए। बट द फार्मर्स टैक्स कहाँ से देगा जब उसके खाने के वो
ऑलरेडी 50 का आलू 20 में बेच के आ रहे हैं, लॉस में। हाँ, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देगा। सो द फार्मर्स वर एनरेज्ड, गुस्सा against this British official, British government. So as a result, this farmers, and at the same, this was one reason. Another reason was this, I told you, Jawaharlal Nehru and then another fellow, जिसकी वजह से इंडिया आज तुम बैठे हो मैं बैठी हूँ, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, दे वर यंग ड्यूरिंग दोज डेज, राइट? वो बहुत जवान थे एंड यंग ब्लड, रेडिकल ब्लड, अभी चाहिए तो अभी चाहिए, नहीं मानेंगे कौन। सो दे वर आल्सो इन अ वे गैदरिंग यंग सपोर्टर्स, ये ब्रिटिशर को भगाएंगे, अभी भगाएंगे, क्या मीटिंग, क्या बातचीत। सो एक तरफ ये यंग ब्लड उठ रहा है, एक तरफ फार्मर्स फार्मर्स, सो दोनों तरफ दे वर कंबाइनिंग टुगेदर एंड दे वर गेटिंग यूनाइटेड। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हेन दे गॉट दिस इंफॉर्मेशन, अपने घर पे बैठ के, हेड ऑफिस लंदन इंग्लैंड, जब उसको पता चला कि इंडिया में बीइंग वन ऑफ आवर कॉलोनी, कॉलोनी में हमको कैप्चर करके रखा था 200 साल से, जहां 200 साल हम कैप्चर करके रखे हैं और अभी वहां के लोग यूनाइटेड हो रहे हैं अगेंस्ट अस, तो भाई हमारा रूल खत्म, हम वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, राइट? एंड यू नो द मेन प्रॉब्लम, लेट मी टेल यू समथिंग आउट ऑफ द बुक, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल। The reason why British could rule us was not because that they had some great strong weapons or something, arms, ammunition, nuclear bomb, वगैरह वगैरह. The only weapon that they had because of which they ruled us for 200 years is our disunity. We were not united. हम आपस में ही मारने मारने पीटने में लगे हुए हैं, तो वह पीछे घुस गया वो मजा से। एंड यही हो रहा है आजकल सोसाइटी में, यू सी एवरीवेयर, डे इन एंड डे आउट, इन द फैमिली, इन द नेबरहुड, अमंग ब्रदर्स, अमंग अंकल आंटीज रिलेटिव्स, वही तो हो रहा है। एंड बाहर के लोग आके मजे लेते हैं। Coming back to the topic, so when the British government got to know about this thing कि चलो ऐसा हो रहा है इंडिया में, people are getting united and once they get united we can't control them, our greatest weapon is their disunity, उसको तोड़ना पड़ेगा। इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, इंग्लैंड लंदन में। एंड दैट टाइम दे हैड सेट अप ए कमिटी रिगार्डिंग द सिचुएशन इन इंडिया। एंड हर एक कमिटी कमीशन जो भी बोलो, हर एक कमिटी का एक हेड होता है इंचार्ज कि चलो तुम देख लो, तुम इस मीटिंग, तुम यू लीड दिस ग्रुप। सो देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड जॉन साइमन, ठीक है? जॉन साइमन वाज गिवन द इंचार्ज हेड कि भाई जॉन साइमन हैंडल दिस मैटर, सी इंडिया में क्या हो रहा है। सो जॉन साइमन, एज अ रिजल्ट दिस कमिटी का नेम पड़ गया साइमन कमिटी, साइमन कमीशन, व्हाटएवर, साइमन कमिटी और साइमन कमीशन। एंड देन साइमन कमिटी दे केम टू इंडिया टू सर्वे द सिचुएशन कि क्या हो रहा है, व्हाई दिस इंडियन पीपल आर गोइंग आउट ऑफ आवर कंट्रोल, ये हमारे हाथ से कैसे निकल जा रहे हैं। सो व्हेन दे केम बैक, दैट टाइम हमारे इंडियन फार्मर्स तो थे ही गुस्से वाले ऑलरेडी, दिमाग गर्म होकर बैठा हुआ है, प्लस दोस यंग लीडर्स, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल, दे वर आल्सो वेरी यंग, रेडिकल माइंडेड, नहीं मानेंगे क्या। दिस एयरविल जो हमारा वाइसरॉय जनरल था ड्यूरिंग दोस डेज, वो इन ऑर्डर टू कंट्रोल आवर इंडियन पीपल, बिकॉज ब्रिटिश ऑफिसर आया भाई, बड़े ऑफिसर आया, आई एम द इंचार्ज ऑफ इंडिया, अगर हमारे मेरे सामने इंडियन पीपल स्टार्ट स्क्रीमिंग अगेंस्ट माय बॉस, तो मेरा क्या कंट्रोल रहा, मेरा क्या इज्जत। सो and when the Simon Commission came, all the Indian people, we welcomed them. We welcomed them very politely. You know how? Go back, Simon. भागो यहाँ से. That was the slogan. वो जैसे ही आए यहाँ पे, we started screaming, go back, Simon. So उस तरीके से हम उसको वेलकम किए। And Irwin, to control the mob, to control the crowd, Irwin made a vague offer, एक झूठा ऑफर दिया था Irwin ने उस समय। बोला था कि ये जो टीम आया इंग्लैंड से, लंदन से, it is for us, the Indians, means आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए आया है इंडिया के बारे में। इंडिया will get independent dominant status, मतलब हम आराम से हम बॉस बन के रहेंगे, we will be able to, nobody will be our boss, will be get a dominating status and all, but that was a fake offer and very soon we'll have a meeting, we'll have a round table conference, उस मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे। सो ये ऑफर देके उसने लोगों को चुप करा दिया। सो ये फार्मर्स एंड ऑल भोले वाले सीधे साधे लोग होते हैं, गांव के लोग, विलेजर पीपल आर वेरी मच इनोसेंट, नॉट लाइक टाउन पीपल एंड ऑल, crooked minded, I don't mean to say everyone, jokes apart, I'm just kidding. So villages people and all farmers they accepted, but there were this what do you call, Nehru, Subhash Chandra Bose and all. No, they didn't go in this useless offer, and they said no, we will not listen to these things. Clear? समझ में आई है साइमन कमीशन? एज पूर्वा, सिविल डिसोबीडियंस समझा दिया, साइमन कमीशन समझा दिया, and there was this one more child asking about globalization, which was out of the book. Thank you, my dear. I'm just trying my best. Yeah, there was one more child asking me about globalization G20, and you mentioned that it's out of the book. See, सीबीएसई सबसे पहले तो बुक में क्या है वही पूछना भूल जाते हैं, आउट ऑफ द बुक कभी नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो आ जाना एग्जाम के बाद। I'll continue this classes. This is just the second day I started. I'll go on
with class 9, 10, 11, 12. ये फोर्स जो सीनियर सेकेंडरी है, स्पेशली विद द ह्यूमैनिटी सेक्शंस, हाँ, हिस्ट्री, पोल साइंस, जियोग्राफी, नॉट जियोग्राफी दैट मच, जियोग्राफी में ज्यादातर याद करना पड़ता है, यू हैव टू मेमोराइज, soil, khadar, bhangar, which are the crops that is grown, what is the temperature, amount of water required, arid soil, the alluvium soil, वगैरह. So you have to memorize more. Explanation you need in this history, Indian polity, economics and all. यहाँ पे ज़्यादा समझना पड़ता है. Thank you, sir. You're welcome, dear. Whoever you are, I don't know by age बोलवा, but you're welcome. I just want study well, exam अच्छा से देना. हाँ, क्या पढ़ना है वो सोच के पढ़ना. Next question. PDF is on the process of making. First, you just have to flip once and you'll understand the entire thing. You don't have to go through the textbook. I mean, it's a kind of a recap. I'm not saying that in detail. I'm just giving you the small keynotes, bullet points, which will help you to recapitulate. याद दोबारा याद करने के लिए कि मैंने क्या पढ़ा था. Next. लाइफ रुक गया था सर, अभी ठीक हुआ. यस माय डियर, ये नेटवर्क की वजह से 2 बार रुक गया था, एक बार नहीं 2 बार. दिस इज द थर्ड टाइम मैं लाइव गया. हाँ, तो शादी हो रहा है ना, पता है ना, पूरा इंडिया के सब टेक्निकल का पिताजी लोग वहां बैठा हुआ है. कल इंस्टाग्राम रुक गया, फेसबुक रुक गया, पता है, सबको लॉग आउट कर दिया. मुझे लॉग आउट कर दिया था. मैंने सोचा चले भाई किसी ने मेरा हैक कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नो क्वेश्चन, नो डाउट. I'm waiting for the next question. Sir, can you explain why do we need to compare the three sectors of Indian economy? Exactly. Okay. ये बच्चा ने कल मुझे मैसेज भी किया था. इसका नाम क्या था? वेट वेट, आई गॉट दिस मैसेज फ्रॉम इन माय व्हाट्सएप. सर, इज why is political parties necessary in a democracy and what are the functions of political party in question? Okay, ठीक है, one by one. Next, same. Okay, so one by one. First, I'll explain this. Why do we need to compare the three sectors of Indian economy, right? And I'll go to this. Why is political parties necessary in a democracy and what are the functions of political party? Okay. So first question. The three. Why do we need to compare? See, comparison करेंगे तभी तो पता चलेगा किसमें कितना कैपेसिटी है. एग्जाम एग्जाम में क्या करते हो? Especially when the results marksheet निकलता है ना, students, you may not willingly want to show, express, but मन में क्वेश्चन आता है ना कि उसको कितना मार्क्स मिला, मेरे फ्रेंड को कितना मिला. हाँ, and if he or she, whoever it is, कम मार्क्स मिलता है, you may not show in the face, you may say हो दे, हो जाएगा, but दिल में अच्छा लगता है ना, उसको कम मिला तुमको ज्यादा मिला, right? Isn't it? सर थोड़ा डेवलपमेंट एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ, कर दूंगा एक एक करके, बस लाइन पे रहना, मैं कर दूंगा, जरूर कर दूंगा. अच्छा, नाउ सेम वे, नाउ वी नो कि हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में सिंपल सीधा लैंग्वेज में पैसा, देश का जो पैसा आता है, देश का पैसा कहाँ से आता है? जितने भी काम करते हैं, मैं अभी जो तुम लोग को समझा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी तो कुछ काइंड ऑफ ए सर्विस, एक तुम लोग को क्लास दे रहा हूँ. हाँ, या फिर मैं जो ट्यूशन लेता हूँ, कोचिंग है, कोई भी जो भी पैसा कम, जो पीपल जो पैसा कमाता है, वट एवर वर्क यू, all the works are categorized into three sectors: primary, secondary, tertiary. Primary mainly agriculture related, nature related. Secondary मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, जहां पे रॉ मटेरियल प्राइमरी से जाता है वहां मैन्युफैक्चर होता है. टर्शियरी सर्विस, जहां हम सर्विस देते हैं. नाउ इंडिया का जो इकोनॉमी है, पैसा, वो पैसा तीनों डिपार्टमेंट से आता है. नाउ कंपेयर इसलिए किया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट से कितना पैसा आ रहा है. नंबर वन, आर यू गेटिंग इट? बच्चा कहाँ गया? DHX NI. Are you getting it? Number one, in order to understand that from which sector of economy, what is the output, what is the contribution in our GDP? What is GDP? Gross domestic product, total हमारा country का जो value है पैसा का. Now पैसा means not in cash, it can be in products also. GDP, gross domestic product. For example, कहाँ रख दिया मैंने पेन? पेन कहाँ रखा है? बैग के अंदर रख दिया. चलो, एक जो पेन होता है ना, पेन का भी एक कीमत है. Now right now, say in my pocket I don't have money. जीरो, बट वो मेरे पास एक पेन है. वो पेन भी अगर मैं जाके पेन, when you buy a new pen it's 10 rupees, but when you sell that pen,
I may not get 10, but at least I may get 2 rupees. So it has got a particular value of in money, in figures. So GDP, gross domestic product. So understand the GDP, we compare the three different sectors of economy. Number one. Number two, we also compare them to see कौन से सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, engaged है, right? Primary में now India's population, it's how much? 150 करोड़, 150. इंडिया किसी चीज में टॉप नहीं है फिलहाल तक, बट पॉपुलेशन में टॉप है। चाइना को ओवरटेक कर दिया, पूरे वर्ल्ड में टॉप टॉप है हम लोग। दैट्स दैट्स नॉट अ गुड थिंग इन पॉपुलेशन। सो कमिंग बैक, सो ये जो 150 करोड़ है, 150 करोड़ में से कितने लोग प्राइमरी में है, कितने लोग सेकेंडरी में काम कर रहे हैं, कितने लोग टर्शियरी में काम कर रहे हैं। दैट इज द सेकंड रीजन व्हाई डू वी कंपेयर, द थ्री सेक्टर्स। थर्ड रीजन, तीसरा रीजन दैट व्हाई डू वी कंपेयर द थ्री सेक्टर्स इज दैट नाउ सी, supposingly say 50 people are engaged in primary sector, 50 लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, और 50 लोग काम कर रहे हैं, पर प्राइमरी सेक्टर से पैसा आ रहा है 20 रुपए। 50 लोग काम कर रहे हैं एंड वहां से पैसा इनकम जो जनरेट हो रहा है 20 रुपीज। नाउ सेम थिंग गो टू टर्शियरी। टर्शियरी सेक्टर में लोग 15 पीपल आर वर्किंग, 15 लोग काम कर रहे हैं टर्शियरी सेक्टर में, बट द इनकम विच इज कमिंग इज 100 रुपीज। कहीं पे 15 लोग काम करके 100 रुपया कमा रहा है और कहीं पे 50 लोग काम करके 20 रुपए कमा रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? व्हेन वी कंपेयर, राइट? व्हाई डू वी कंपेयर? थर्ड फोर्थ थिंग, व्हाई डू वी कंपेयर? इन सम सेक्टर्स जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसमें से दो तीन सेक्टर, दो तीन ही है क्या, दो तीन, देयर आर थ्री सेक्टर्स ओनली, बट देयर आर सर्टेन सेक्टर्स वेयर जितना लोग चाहिए उससे ज्यादा घुसा घुस के बैठा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, आई एम अ फार्मर, आई डू फार्मिंग, ठीक है, बट द लैंड एरिया दैट आई हैव, जो लैंड का साइज है, इट्स इनफ, मैं अकेला उसमें फार्मिंग कर सकता हूँ, मुझे वो दूसरा आदमी का सपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज छोटा सा लैंड है, तो मैं आज सुबह से शाम तक, वो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल मैन, पेट कुदाल ना? हाँ, कुदाल लेके मैं उसको सुबह शाम तक करूंगा, सुबह से शाम तक छोटा सा जमीन मेरा हो जाएगा। नाउ इमेजिन आई गॉट अनदर ब्रदर, मेरा एक भाई है मेरे ही एज का, मुझसे एक साल बड़ा या एक साल छोटा, वटेवर। ना भाई का कुछ, ना उसका जमीन है ना कुछ काम धाम है, तो भाई को बोला भाई चले काम कर, तू क्या घर में बैठ के क्या करेगा? तू भी आ जा एक दाव लेके, बैठ के घास काटना, जंगल काटना। तो एक छोटा सा जमीन में व्हेन द पीपल विल सी फ्रॉम आउटसाइडर, जो रास्ते से लोग जाएंगे वो देखे, वाह, दोनों भाई मिलके दिन सुबह धूप में बैठ के शाम तक काम करते हैं। अरे दोनों भाई का उस जमीन में जरूरत नहीं है, एक भाई काफी है, जंगल भी काट लेगा एक भाई, खेती बाड़ी भी कर लेगी, जमीन छोटा सा है, पर दुनिया के लिए तो दो भाई काम कर रहे हैं ना, वो बेकार में एक्स्ट्रा, अगर उस भाई को निकाल भी दोगे, देन आल्सो इट विल नॉट इफेक्ट एनीथिंग, ना लॉस होगा ना लाभ होगा। सो ऐसे देयर आर मेनी पीपल एडिशनल, यू कैन से अंडर एम्प्लॉयड, जरूरत नहीं, अंडर एम्प्लॉयड और व्हाट डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, हाँ, डिसगाइज अनएम्प्लॉयड, एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड लेकिन वो पता नहीं चलता। डिसगाइज का मतलब क्या है? भेज छुपा के रखना। दे आर अनएम्प्लॉयड लेकिन दुनिया को लगता है कि दे आर एम्प्लॉयड। सो ये व्हेन यू कंपेयर दिस थ्री सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यू गेट द रियल पिक्चर कि कौन से सेक्टर में कितने पीपल है, कहीं पे कोई डिसगाइज लोग तो छुपा हुआ नहीं है, दुनिया के लिए वो काम कर रहा है, बट एक्चुअली में उसको निकाल भी दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पीपल वर्किंग who are actually not required. So all these answers you will get how? After comparing the three sectors. किसका कितना इनकम है, कितने लोग कहाँ का घुसे हुए हैं, कौन से सेक्टर में, प्लस इफ देर इज एनी काइंड ऑफ एडिशनल पीपल एडेड एंड ऑल। गॉट इट? गायब हो गया। नेक्स्ट कौन है? Why is political parties necessary in a democracy and what are the function of a political party? अच्छा, see, political party is required because what does political party do? Political party represents, it's one particular party, any party, ABCD party, पकड़ो एक पार्टी है ABCD, उस ABCD की पार्टी के अंदर कितने सारे लोग होते हैं? लैक्स एंड लैक्स। सो लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर हैविंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ माइंडसेट, हर का अलग अलग सोच, अलग अलग ड्रीम, अलग अलग विशेस, बट एज ए पार्टी व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड एज वन ग्रुप। सो हंड्रेड्स ऑफ पीपल का ग्रुप, जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी एम है, वो एक लिस्ट में वन ग्रुप का बोल के डिफाइन होता है। अदरवाइज इफ देर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, हर इंसान अपने में मिनिस्टर होगा, हर इंसान अपना पार्टी बना लेगा, राइट? अभी तो यू नो, एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, in India we have got more than exact figure तो नहीं है, मुझे भी नहीं पता, but approximately more than 750 political parties,
इन इंडिया रजिस्टर्ड, बट उसमें से कितनों का नाम जानते हो तुम? कितने हैं जो सामने आके एक्चुअल में एक्टिव है? कोई बीजेपी, कांग्रेस, अभी कौन सा आया? आम आदमी पार्टी, हाँ? हमारे यहाँ पे लोकल रीजनल एजीपी एंड ऑल, बस ये सुन के 10, 15, 20, बट एज पर द रेस्ट जो ऑफिस में जाओगे ईसीआई के ऑफिस में, वहां पे लिस्ट निकालोगे 750 से भी ज्यादा है। लेकिन काम तो कुछ ही, सामने तो कुछ ही लोग आ रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? अदरवाइज एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंसान अब खुद में एक पार्टी होगा, हर एक इंसान खुद में एक मिनिस्टर होगा। हम्म? तब मामा का क्या होगा अगर सब कोई बोलेगा मैं ही मामा हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? If everybody start claiming that I am mama, what will happen to the real mama, man? Finish. That is one of the reason why do we need political party. पूरा ग्रुप का थॉट वन करके प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do we need political party in a democracy? Yes, democracy. See, democracy means what? People's representative, people's rule, people's choice. So what do we do? What does the party do? The party, whatever party, ABCD, जो भी party election खेलता है, election जीतता है, what does they do? They represent the people. How? Well, how are they ruling the government? Because they got the vote from whom? From us. That means indirectly they are representing us. It is our choice. It is our wishes. Our desire कि मैं चाहता हूँ ऐसा हो, इसलिए तो वो मिनिस्टर बना, इसलिए तो मैंने वोट दिया, नहीं तो वो कैसे बनेगा? फंक्शंस, फंक्शंस तो देयर आर 7 फंक्शंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पॉलिटिकल साइंस का बुक देना तो उसमें 7 फंक्शन है। पॉलिटिकल पार्टी 7 काम करते हैं, 7 काम करते हैं, व्हाटएवर पार्टी इट इज, एबीसीडी जो भी पार्टी है, सब पार्टी एक ही काम करता है। 7 वर्क। किधर ये पॉलिटिकल पार्टीज? मेरा नाश्ता आ गया यहाँ पे, मुझे बोल रहा है इवनिंग स्नैक्स करने। नहीं, यहाँ पे लाइव चल रहा है, यहाँ पे खाऊंगा तो सब बच्चे देख लेंगे, फिर मेरा पेट दर्द होगा, राइट? सी फंक्शंस, वो पीरियड बन गया सब चैप्टर का। हाँ? कहाँ पे कर रहे हो? बता देना मुझे, मैं यहाँ बता दूंगा बच्चों को। या चिल्ड्रन, दिस वो जो तुम लोग का नोट्स था, जो भी था, की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स बन गया। हाँ? ये साइंटिस्ट लोग यहाँ पे बना रहे हैं बैठ के, ठीक है? अच्छा, functions. Coming back to the functions. What are the functions of political party? See, the very first function everybody knows, contesting election, right? ये देखो कमेंट्स में किसने भेजा, पीडीएफ हो गया, उसको पीडीएफ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पीडीएफ हो रहा है, बन गया। ये लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या ड्राइव साइट लिंक सिंक कुछ क्रिएट कर रहे हैं, दे देगा। ठीक है, तुम लाइन पे रहो, जैसे ही देगा I'll अनाउंस इट। मैं बता दूंगा कि इन लोगों ने शेयर कर दिया फाइल। पीडीएफ ही चाहिए क्या? मेरा शक्ल नहीं देखना है क्या? इतना हैंडसम सा चेहरा नहीं देखना है, पीडीएफ चाहिए? व्हाट मैन, यू गाइस आर वेरी सेल्फिश मैन। आई एम डेडिकेटिंग माय टाइम एंड गिविंग यू माय बेस्ट। हाँ, this is one of the most important question. Mention the criteria for political parties to be recognized as state party and national party. Very important question. I'll come to that. Before that, function. अच्छा, number one function is that contesting election. We know, right? वो election लड़ाई करते हैं जीतने के लिए. Number two, what does these parties do? The policies, whatever programs they have, वो क्या करते हैं? बताते हैं ना इलेक्शन से पहले कि हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे, हम रास्ता बनाएंगे। हाँ, इलेक्शन के समय हम रास्ता बनाएँगे, इलेक्शन के बाद रास्ता गड्ढा हो जाएगा, वो हमारा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा, तो वो बताते हैं पॉलिसीज़, वो बताते हैं अपना पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, राइट? दैट इज़ देयर सेकंड फंक्शन। व्हाट इज़ द थर्ड फंक्शन? इट इज़ देयर इन योर बुक ओनली। द थर्ड फंक्शन इज़ लॉ, डेफिनिटली जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जीतता है, वही गवर्नमेंट बनाता है और वो जो गवर्नमेंट बनेगा, वही लॉ बनाएगा। हम बोलते हैं कि लॉ इज़ मेड बाय पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इट गोज़ टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साइंस। अरे लोकसभा राज्यसभा में कौन बैठा हुआ है? एमपी। हु आर दिस एमपी? फ्रॉम सम पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन जीत के आया। तो सीधा बात करूं तो कौन? पॉलिटिकल पार्टी मेक्स द लॉ, राइट? नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ये तो बता दिया ऑलरेडी। दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट, अरे इंडियन गवर्नमेंट अभी राइट नाउ किसका? इट आल्सो बिलोंग्स टू वन पॉलिटिकल पार्टी, राइट? राइट नाउ करेंटली कौन सा पार्टी है? बीजेपी। बीजेपी इज गवर्नमेंट। समटाइम्स यू माइट हैव हर्ड आल्सो द ऑपोजिशन पार्टी एंड ऑल, स्पेशली व्हेन दे गो फॉर इलेक्शन कैंपिंग, वो चिल्लाते हैं ना, बोलते हैं ना, बीजेपी इज गवर्नमेंट।
बीजेपी का सरकार, दे डोंट से भारत का सरकार, इंडियन सरकार। ऑपोजिशन एक दूसरे को ब्लेम करता है, सो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, दैट इज द नेक्स्ट फंक्शन। नाउ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन ऑफ दोज जो नहीं जीतता है, पर नहीं जीतने वाला का भी कुछ फंक्शन होता है, दे आल्सो हैव सर्टेन ड्यूटी। व्हाट ड्यूटीज दे हैव? नाउ फॉर एग्जांपल सी, opposition plays a very important role, I will say that. Many a times the ruling party before election they make several promises. हम जीतेंगे तो हम रास्ता बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एबीसीडी। वंस दे विन द इलेक्शन, हु आर यू? कौन हो तुम? तुमको लगता है सर झूठ बोल रहे हैं? ट्राई करके देखो। हाँ? इलेक्शन से पहले जो इंसान तुम्हारे पास ऐसा आएगा ना, ऐसे जोड़ के, इलेक्शन के बाद तुम जाना उसके घर मिलने, फिर देखना तुमको गेट में क्या बोलता है, हु आर यू? कौन हो तुम? अपॉइंटमेंट है? भागो यहाँ से। Coming back, so opposition, that is another function. What is opposition political party? So वो क्या करता है, they always try to find out the fault of the ruling party. थोड़ा कुछ गलती किया ruling party, they will come out in there, protest these that वगैरह वगैरह. So in a way opposition party also plays a function to find out the fault. Yes, दोनों का आपस का लड़ाई है, लेकिन प्रॉफिट किसका होता है? आम आदमी, कॉमन मैन, मैंगो मैन का। वो एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, बट रूलिंग पार्टी को अगर जीतना है तो वट एवर प्रोमिस दे मेड दे विल हैव टू डू। नेक्स्ट फंक्शन, पब्लिक ओपिनियन। ए क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या टूट टूट आवाज कर रहा है? तुम उधर से कुछ कर रहे हो? अच्छा, ये लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? What are you what are you guys doing, man? तुम लोग का काम धाम नहीं है। कमिंग बैक, पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। वो पहले ही बता दिया। अब फॉर एग्जांपल जैसे वन लीडर, एनी लीडर, वन मिनिस्टर, that one minister is not one, that one minister is actually whatever that particular individual speaks from mouth, he is not speaking his word, he is speaking the word of thousands of people. So thousands of people's opinion is channelized, or you can they shape into one person's opinion. Are you getting it? Next function, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है, पता है? हम्म? कुछ दिन पहले निकला था क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, व्हाट गवर्नमेंट से कभी साइकिल मिलता है, कभी क्या पानी मिलता है, घर का फ्री का पानी। कुछ दिन पहले सुनने में आया था, वुमेन्स वर गेटिंग फ्री गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर। देयर आर वेरियस स्कीम्स आर देयर, व्हाटएवर। सो व्हाटएवर दिस स्कीम्स फॉर द पीपल, मेनी अ टाइम वी एज अ कॉमन मैन हमें वो स्कीम नहीं मिलता है। हम क्या करेंगे? मिनिस्टर के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ, पुलिस में जाएंगे, कोई सुनेगा? नहीं। इससे अच्छा तो घर जो आस-पास में लोकल एमएलए है ना, लोकल मिनिस्टर्स, जहाँ पे तुम रहते हो उसके घर चले जाओ। एंड इन केस इफ द मिनिस्टर इज फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी, हारा हुआ पार्टी से है, वो तुमको लेके पूरा ग्रुप रास्ते में आ जाएगा। हम्म? हमको देगा बोला नहीं दिया, एंड एज अ रिजल्ट द नेक्स्ट डे वो हमें मिल जाता है। सो इन अ वे पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड्स एन एक्सेस पाथ, रास्ता बना देता है। फॉर व्हाट? फॉर द वेलफेयर स्कीम जो पीपल के लिए बना होता है। राइट? 7 फंक्शंस। एम आई क्लियर? नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंट एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, ये भूत एच 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 कौन है? भूत ना भूत। एनीवेज, ओके, डेवलपमेंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़के क्या करेंगे, क्या करे? जिसने पॉलिसी निकाला उसको पूछो। राइट? बेटा को मत बचाओ, बेटा को मत पढ़ाओ। मैंने तो नहीं बनाया ना पॉलिसी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। Boys are all the time. Look, I'm not being judgmental, or I'm not being biased, but yes, whoever it is, Bhoot HH, I can understand your feelings. I being a male, many a times we have to be silent and take, lots of things. We are just like those sponge जो होते हैं ना, ऊपर से पानी डालो, कुछ भी डालो, we have to soak it. आराम से नीचे निकाल भी नहीं सकते, we can't even express. Coming back, development. See, development does not have any proper definition. बुक में तुमको डेवलपमेंट का डेफिनेशन नहीं मिलेगा, डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, गूगल में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। नाउ यू विल से व्हाई इज दैट सो सर? बिकॉज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट changes from individual to individual. Now for example, if you ask me, so what is development for you, right? So what are the difference between coming to? Achha. So if you ask me, so what is development for you, I may say something else. I may say the biggest development for me will be
जिस दिन मैट्रिक का रिजल्ट निकलेगा और तुम लोग सब मिठाई लेके आओगे, राइट? Correct? That will be a big development for me. Now the same thing is if the same question remains the same, but if it is asked to individually, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए जो chat में है, if it is being asked to you, what is development for this girl, what is development for that boy, definitely you will all will have a different answer. If you ask to a boy, boy will say the day I get one particular bike or car or iPhone or something, as per the trend आजकल जो चल रहा है. जिस दिन मैं बाइक लेके घूमूंगा मम्मी पापा मुझे बाइक देगा आईफोन 15 लॉन्च हुआ वो देगा दैट इज डेवलपमेंट फॉर मी द सेम थिंग इफ यू आस्क टू अ पर्टिकुलर गर्ल the girl may have a different answer so definitely in simple language if I explain you machata development simply means growth progress which changes from individual to individual for a farmer if you ask what is development farmer will say जिस दिन मेरा खेत मेरा farm it will be lots of crops and all I'll be able to sell all these crops that will be a big development for me if you ask a particular now ये क्या नाम है इसका पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन जो ज्यादा इंटरेस्टेड गेम्स में उसको पूछो व्हाट इज डेवलपमेंट वो बोलेगा जिस दिन मैं ओलंपिक खेलूंगा गोल्ड मेडल लेके आऊंगा वो मेरे लिए डेवलपमेंट है सो आई होप आई एम क्लियर भूत एच एच आई डोंट नो व्हाट इज रिटन इन द नेम दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है mention the criteria for yeah mention the criteria for political parties to be recognized as a state party very important I will syllabus sir syllabus नहीं है क्या? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। मैंने तो दिया था जब मैंने फर्स्ट लाइव किया था, वो ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस हट गया। बट देन अगेन, इफ यू डू यू हैव माय नंबर? यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल शेयर द सिलेबस। टीम सरकार, तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना, रिमाइंड कर देना, मैं तुमको भेज दूँगा। पूरा बनाया हुआ है मेरे पास पीडीएफ। कौन-सा पढ़ना है, कौन-सा नहीं पढ़ना है। नो पार्टी सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड इन ऑल सिचुएशन। यार ये तो बता ही था अभी। वेयर वर यू? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। आईजी गैस गेमिंग, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस क्वेश्चन। अच्छा, I was explaining one of your question only, this gaming fellow. क्या था? Mention the criteria for political parties to be recognized as state party and national party. Very important. Note down. That I have already shared yesterday. But then again, once again, कहाँ पे था वो पेज? हाँ, लिख लो, जो जो सुन रहा है लिख लो ध्यान से, बिकॉज ये बुक में यू विल नॉट गेट एग्जैक्टली, बुक में पूरा घुमा फिरा के दिया हुआ है, जलेबी बना दिया। इवन इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई गिव इन सिंपल लेमेन्स लैंग्वेज, राइट? पेन पेपर ले लिया? ए गैस गेमिंग, आईजी फॉर यू स्पेशली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट स्टेट पार्टी, टॉपिक लिखो स्टेट पार्टी, ठीक है? क्राइटेरिया टू बिकम अ स्टेट पार्टी, क्राइटेरिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, टॉपिक लिख लिया। पॉइंट नंबर वन, व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया? The party must secure at least 6% of the total votes. टोटल वोट जितना भी है, 1000 लोगों ने वोट किया, उसका 6% उस पार्टी को मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर वन, स्टेट पार्टी, टू बिकम अ स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, द पार्टी मस्ट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स। कौन सा इलेक्शन में? डेफिनेटली स्टेट पार्टी के लिए है तो लेजिस्लेटिव इलेक्शन होगा ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, लोकसभा राज्यसभा का तो होगा नहीं। The party must secure at least 6% of the total vote in legislative assembly. Point number one. Done? Sorry? Link is ready. How many minutes more for me to end this? बीच में 2-3 बार कट गया था ना? यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और they are asking. ठीक है, मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा कर दूँ। Yeah, the link is ready for this. What do you call? कितने बच्चे ऑनलाइन है? 7 बच्चे। दे दो, फिर हटा देना। जो जो बच्चा ऑनलाइन रहेगा उसी को मिलेगा। दे दो, दे दिया? तुम लोग मेरा आईडी से दे दो। All right, guys. Did you see there is a link shared in the comments? In the comments. कहाँ पे? पिन चैट। अब पिन चैट क्या है? मुझे आता नहीं है ये सब। ये मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है, जिस टेक्नोलॉजी एंड ऑल। See this pin chat or pin comments, there is a link shared. Did you find? जाओ उसके अंदर मिलेगा। अच्छा,
where I was state recognized party. Point number one, the party must secure at least 6% of the total votes in legislative assembly election. Point number two, and point number two, they must win at least two seats. एक है votes, 6% of the total votes. एक है two seats, मतलब दो एमएलए उसके पार्टी से बनना ही पड़ेगा. मतलब दो सीट मिलना ही पड़ेगा. क्लियर? क्लियर? अरे जवाब तो दो, कहाँ से गायब हो गए? कौन पूछ रहा था ये? हाँ, आईजी गेस्ट गेमिंग. मुझे जो नाम दिखाई दे रहा है वही बोल रहा. आई डोंट नो द रियल नेम. आर यू देयर? डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन द नेशनल पार्टी क्राइटेरिया और नॉट? बीच में गायब हो जाते हो. सर स्क्रीन में जो पीडीएफ था वो वाला नहीं है. अरे वो पीडीएफ तो सिलेबस का है. दिस पीडीएफ इज फॉर योर द रिकैप ऑफ द होल चैप्टर. आई टोल्ड यू ना 5 मिनट में पूरा चैप्टर समझ जाओगे. ये जो लिंक शेयर किया ना, ये लिंक है. हाँ, मैंने जो बताया था ना अलादीन का जीनी, 5 मिनट में पूरा चैप्टर समझ जाओगे, ये उसका लिंक है. विद इन 5 मिनट्स एक एक चैप्टर तुम्हारे, हर एक चैप्टर समझने के लिए इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स फॉर यू. इफ यू जस्ट रीड वंस, just read once what is given there, chapter name. Within 5 minutes you'll understand that particular chapter. ये वो है. और जो मेरे पास स्क्रीन में था that was CBSE वेबसाइट सिलेबस एंड ऑल, क्राइटेरिया, मार्क्स एंड ऑल. कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैथ में क्या क्या आएगा, दो चीज पहले क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, that was it. अच्छा, ये गेस्ट गेमिंग तो गायब हो गया ना, मुझे एक्सप्लेन करो बोल के. हाँ, I told about to become a state recognized party, there are two criteria: 6% of the total vote in legislative assembly election, and two seats you have to win. Next, what is the criteria to be recognized as a national political party? Point number one: 6% of the total vote, but in Lok Sabha election, 6% of the total vote in Lok Sabha election. If in case you are not getting 6% of the total vote in Lok Sabha election, इसको हटा दोगे तो इसके जगह और एक है. देयर आर टू ऑप्शंस. यू हैव चॉइस ए, चॉइस. इन पॉइंट नंबर 1 देयर आर टू चॉइसेस. In point number 1 there are two choices. One is either you can score 6% of the total vote in Lok Sabha, or what you can do in state assembly election you have to win 4 seats. So अगर 6% of Lok Sabha vote नहीं मिल रहा है लेकिन state assembly में 4 seats मिल गया तो point number 1 criteria fulfill for national party. Point number 1 only, point number 2 भी है. Point number 2, this is mandatory. You will have to win at least 4 seats in Lok Sabha. पॉइंट नंबर 2 का कोई ऑप्शन नहीं है. पॉइंट नंबर 2 करना ही पड़ेगा. पॉइंट नंबर 1 में दो ऑप्शन है, या तो ए या तो बी, दो में से एक फुलफिल कर लो. बट पॉइंट नंबर 2, यू विल हैव टू विन 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन, देन ओनली यू विल गेट दिस व्हाट यू कॉल नेशनल पार्टी. क्लियर? खत्म. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर? यस, सी माय डियर, इन द कौन है एग्जाम के बाद पार्टी होगा ना सर? हाँ, करेंगे. तुमको पार्टी चाहिए पहले एग्जाम तो दो, मार्क्स लेके आओ, गुड मार्क्स, गुड स्कोर. डेफिनेटली आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माय स्टूडेंट्स. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं. एक बच्चे ने बोला पीडीएफ इज नॉट ओपनिंग, कैन यू फॉरवर्ड इट? सी द कमेंट. वेट, ये लोग बैठ के चेक कर रहे हैं. सर द पीडीएफ इज नॉट ओपनिंग नाउ, सो कैन यू फॉरवर्ड इट? इज देयर एनीबody else? Can you confirm, children? Because one child you can see in the comment chat, chat में दे रहा है कि PDF is not opening. Is it the same for all or the others you got this PDF? जो अलादीन का जीनी था. Somebody please confirm me. I got confirmation from one child, but my opening. अच्छा, ये भी बैठ के देख रहे. I got it, sir. Okay, I got two confirmation. Thank you, Apple's. Wait, the IT team is working on it. Which IT team? ये बच्चा कौन है? Who is this? Anyways, coming back. अच्छा, next question. What was the next question? No party system is ideal in all.
What was the next question? K Gaming opening, sir. No, it's opening, man. I am getting the confirmation it's opening. Try once again. This child, the link, because Adisi, in front of you, you can see the chat. Three, four of them have given the confirmation. It's opening. They got it. This and that. Anyways, so those keynotes, whatever I have shared in that link, it will just take 5 minutes for you to understand the chapter. What was the next question? Can anybody remind me? Because time भी up हो गया. अगर तुम लोग बोलोगे doubt है, then I'll extend. Otherwise, I'll stop here so that you guys can also revise, study. Hi, hello, my dear. स्टडी वेल नेट नहीं होगा 199 का रिचार्ज कर लो ओपन हो जाएगा हु इज दिस चाइल्ड मैन एनीवेज मजाक बहुत हो गया अब बताओ एनीथिंग यू वांट मी टू एक्सप्लेन apart from whatever we have discussed merch mary there are mad people also here okay I'll wait for another 3 more minutes if I get any question then I'll explain I'll start with that or else I'll end up because tomorrow morning you guys got to go and appear your examination you need to revise at home as well. Any more question? Any more queries? You got the clear explanation about state recognized party, sir. हमने हमारे टाइम में ये privilege क्यों नहीं मिला? Money and credit एक बार explain कर दीजिए. Open हो गया. Okay. So one by one, first I'll explain money and credit. Next I'll tell you about tips to write the paper. Okay. First money and credit. Money is nothing. A medium of exchange. Simple. If you get a question, what is money? It's a medium of exchange. पहले जमाने में मनी नहीं था हम सामान के बदले सामान लेते थे अभी हम एक पेपर देते हैं उसके बदले जो चाहिए हम वो ले लेते हैं क्योंकि वो पेपर अगला फिर किसी और को देके कुछ और ले लेता है सो वी आर एक्सचेंजिंग बेसिकली राइट मनी एंड नाउ इट इज इन द मॉडर्न वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एक तो हमारा है ना गूगल पे यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करो चेकबुक डेबिट कार्ड राइट एंड सो ऑन सो मेनी थिंग्स वी हैव मॉडर्न मनी क्रेडिट व्हाट इज क्रेडिट लोन उधारी from where can we take loan? From where can we take udhari? From two sources, two places. Formal and informal. फॉर्मल वो है जो जहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस टर्म्स एंड कंडीशंस कितना इंटरेस्ट देना होगा क्या देना होगा कब देना होगा लाइक फॉर एग्जांपल बैंक्स एंड financial institutions where they follow certain they have got their terms and conditions they can't even the institution cannot do whatever they like as per their wish at any moment anytime no matter you might have taken money from them but they can't do whatever they feel like they can only act according to the terms and conditions what is mentioned formal sector इनफॉर्मल इनफॉर्मल का तो कोई एंडिंग ही नहीं है कहीं से भी ले लो दोस्त से ले लो मम्मी पापा से ले लो फ्रेंड से ले लो फ्रेंड के बाद में क्लास में बोलो भूल गया कल लेके आऊंगा राइट वो कल कभी नहीं आएगा राइट कितने कल के बाद कल आते हैं कितने सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा 20 रुपए नहीं मिला मेरा 50 रुपए नहीं मिला हाँ इनफॉर्मल सेक्टर गॉट इट तो तुम लोग हिला क्यों रहे हो मेरे डेस्क को खुजली हो रही है बार बार हिलाते रहते लैपटॉप को क्या बोल रहा था हाँ क्रेडिट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर नाउ इनफॉर्मल में देर इज नो रूल्स देर इज नो टर्म्स एंड कंडीशन जो मर्जी वो बोल दिया तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड ने तुमको पैसा दिया 10 रुपया वो बोलेगा ठीक है तू मुझे 2 दिन बाद देना कोई अननोन पीपल है वो तुमको 10 रुपया देगा सुबह देगा शाम को शाम तक दे देना हाँ so no proper terms and conditions no rules and regulations in informal sector but informal it's same for all in the formal sectors and all and but in when you go for formal sector there I told you terms and conditions so you'll have to fulfill it there's a certain procedure so as a result जो विलेजर्स या गरीब लोग है ना लोन्स आर मेनली फॉर गरीब लोग गरीब लोगों के लिए बट लोन गरीब लोग कहाँ जाते हैं वो रूल्स एंड टर्म्स एंड पेपर डॉक्यूमेंटेशन वो चले जाते हैं इनफॉर्मल के पास पड़ोसी से ले लिया नेबर से ले लिया एंड एज ए रिजल्ट इनफॉर्मल कुछ भी करता है जो मर्जी वो हिंदी मूवी में देखते हो ना आके बर्तन निकाल देगा घर से निकाल देगा सामान उठा के लेके जाएगा बट इनफॉर्मल दे कैन नॉट डू बट गरीब वहां जाते ही नहीं है बिकॉज ये पेपर लाओ वो डॉक्यूमेंट्स लाओ ये करो उसे कौन जाएगा वहीं चले जाते हैं बट रिच पीपल एंड इफ यू गो टू फॉर्मल सेक्टर the rate of interest and all is very low because they are guided by RBI in India. In India,
उसका एक बॉस बैठा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रूल बनाएगा वो सब बैंक सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वही फॉलो करना पड़ेगा। बट इनफॉर्मल कोई बॉस नहीं है जिसका जो मर्जी वो रूल बना दिया। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? हम्म? और भी 2-3 क्वेश्चन था, ये बोल के मैं टाइम अप खत्म। हाँ, टिप्स टू राइट द पेपर टुमारो। सी, simple language, social, right? It is not English literature. Write in points and give up those point. If you see it's a 5 mark or 3 mark, छोटा सा एक पॉइंट दिया, पॉइंट के बारे में एक दो लाइन डिस्क्राइब कर दो। नंबर वन। नंबर टू, नीट एंड टाइडी। देखो सिंपल लैंग्वेज, जो इवेल्युएटर होता है ना, जो पेपर चेक करता है, उस इवेल्युएटर के लिए यू मेक द वर्क इजियर, मतलब राइट इन सच ए मैनर कि पेपर देख के उसको पेपर से प्यार हो जाए। वाह कितना सुंदर है, वो खुशी खुशी मार्क्स दे देगा। Many a times, because of handwriting plays a very big role, especially in public examinations and all. Even if you write something correct, but you wrote in a messed up manner, इवेल्युएटर भी तो इंसान है ना। हम जो टीचर जो हम जो बैठे हुए जो हम पेपर चेक करते हैं, हम भी तो इंसान है। तो हमारा भी कभी कभार कभी होता है ना, तुम्हारा भी घर में सुबह मम्मी से एक थप्पड़ खा के आया, क्लास जाके फ्रेंड बोलेगा गुड मॉर्निंग, राइट, मेरे साथ बात मत कर, बात। तो हम भी घर से क्या कौन सा मूड से आते हैं, उसके ऊपर पेपर दिख लिया वो गंदा वाला, इवन इफ द आंसर इज करेक्ट, वी वोंट फील लाइक रीडिंग। मेनी टाइम्स इट हैपेंस, कभी कभी होता है, टू बी ऑनेस्ट, सच बोल रहा हूँ। कभी कभी मैं ऐसा बहुत बार मैं सीबीएसई इवैल्यूएशन कर चुका हूँ, बैठता हूँ। कभी कभी फर्स्ट टाइम जब मैं 2013-14, माय फर्स्ट इवैल्यूएशन वाज 14 और 15। फर्स्ट टाइम जब मैं सीबीएसई बोर्ड पेपर चेक करने गया था, आई वाज शॉक्ड, लाइक कैसे चेक कर रहे कुछ टीचर्स। देखा झुक झाक चेक, अरे भाई निंजा हथौड़ी आ गई है, कुछ भी चलता है, सिंह चैंग बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। So be careful with the handwriting, neat and tidy. Make the work easier for the evaluator, right? That's one of the greatest tips, how to write examination. And first attempt, supposedly there are 30 questions. Out of 37 questions you don't know randomly. So what will you do is that write those answers which you are very much assured of. गारंटी ये मुझे अच्छा से आता है वो पहले, और क्वेश्चन नंबर सही लिखा, रोल क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर दैट पकड़ो 3 4 5 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 1 के बाद 7 लिखो। बट प्रेजेंटेशन पहला 4-5 पेजेस ऐसा दिखा दो कि बच्चे को पूरा आता है, और बाकी जो खिचड़े नहीं आते वो लास्ट में लिखना, बना बना के, लेकिन छोड़ के मत आना। छोड़, सीबीएसई बहुत अच्छा है, हम वी गेट गाइडेंस कि बच्चे को हमेशा हमको जितना हो सके वी मस्ट नॉट मेक देम फेल। सो लिख के आना, कुछ लिख के आना, छोड़ के मत आना, व्हाटएवर इट इज। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, प्लीज जेंडर रिलीजन कास्ट एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। लास्ट टॉपिक, डेफिनेटली मैन, माय डियर, हुएवर यू आर, आई विल एक्सप्लेन। इन जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, वहां पे पढ़ने के लिए सिर्फ दो ही टॉपिक मिलेगा, वन इज कम्युनिज्म, वन इज कम्युनिज्म, ठीक है, उस चैप्टर में है। वो जो कि सपोजिंगली आई एम अ बॉय, सो ऑल द बॉय मस्ट प्ले बास्केटबॉल बिकॉज आई प्ले बास्केटबॉल, इफ देयर इज एनी बॉय हु इज प्लेइंग फुटबॉल ही इज नॉट अ बॉय। नहीं, कौन सा बात हुआ? That is again wrong. Are you getting it? That's called communism. That is one of the important topic in gender caste religion. Another thing you'll get is caste in politics and politics in caste. आजकल तो हम लोग कास्ट का बात करते हैं ना, डिफरेंट कास्ट, दिस कास्ट, कास्ट में भी हम लोग राजनीति करते हैं। एंड व्हाट इज राजनीति? पावर, पॉलिटिकल। एंड जो पॉलिटिक्स है, ये जो इलेक्शन के समय जो मिनिस्टर्स कैंडिडेट्स जो घूमते हैं वहां पे वो कास्ट। बेस्ट एग्जांपल जो अवेलेबल है गूगल में, मैं उसी के एग्जांपल दूंगा। वन ऑफ द कांग्रेस लीडर, यू नो वेरी वेल, पप्पू, राइट? कौन है पप्पू? सी, कहीं पे भी वो लेक्चर देगा, बोलेगा दलित भाइयों और बहनों, हम जीतेंगे तो आपके लिए वो करेंगे। अरे तुम इलेक्शन के लिए गए, इसके बाद दलित कहाँ से आ गया बीच में? You went for election, tell, share your agendas that our party will open education system, we will make this law, this rule. शुरुआत होता है regarding caste. So in politics, you are bringing caste, and in caste, politics लेके चला जाता है। Now gender, gender is a topic which talks about the biasness in the society. मैन एंड वुमेन के बीच में जो डिफरेंसेस जो सोसाइटी ने बनाया, कौन सा बुक में लिखा हुआ है? हाँ? हम बचपन में जब पढ़ते हैं क्लास 1 क्लास 2, मेरा बेटा क्लास 1 में है, माय एल्डेस्ट सन आयुष्मान, उसके बुक में भी कभी कभी कुछ इमेजेस ऐसा है, वुमेन आर शोन घर पे खाना बना रहे हैं। अच्छा, तो बायसनेस तो वहीं से घुस गया ना। क्यों, व्हाई इज द पिक्चर नॉट गिवन कि मेल खाना बना रहा है? तो मेरे बेटे के दिमाग में घुस गया माँ मतलब खाना बनाएगी। अरे ये कहाँ का बात हुआ? सो जेंडर बायसनेस इन ए वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर जगह होता है।
स्कूल में, घर पे, फैमिली में अनुभव हमारे दिमाग में बैठ जाता है। उसी के बारे में बताया गया है।